अगर आपके पास एक कार है like this and this car is having a force F and the frictional force is, let's say, 50 Newton. The mass of this car is 4 kilograms, right? And let's say it's accelerating with an acceleration of 1 meter per second square. तो मुझे बताएं कि फॉरवर्ड फोर्स की क्या वैल्यू होगी? Sir, is the answer 19 newtons? Yes. The answer is 19. 19 newtons. Forward minus frictional force gives you the resultant force that is equal to mass into acceleration. Frictional force is, let's say, 15. The mass is 4. The acceleration is 1. So the answer is 19. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी फॉरवर्ड फोर्स 0 हो जाती है और बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन है वो है 16 न्यूटन, mass is 4 kg, so minus acceleration will be minus 4. So deceleration is 4. Decelerate का मतलब यही है कि वो, तो अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा या डीसेलरेट करेगा तो फोर्सेस are not balanced, they are unbalanced. For example, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर वेट नीचे एक्ट कर रहा है and the air resistance is acting here and I call this R. So mg minus R is equal to ma and A is equal to mg minus R over m. So you should know that when the weight is equal to the air resistance, what happens is when the weight is equal to the air resistance, what happens is that the acceleration is 0, right? जब आपके पास इस तरह से होता है तब फोर्सेस बैलेंस होती हैं, अगर एक्सेलरेट और डीसेलरेट करेगा तो फोर्सेस बैलेंस नहीं होगी, ठीक है? तो मैंने अभी आप लोगों को यही बताया है सेकंड लॉ की एप्लीकेशन. अब हम जा रहे हैं थर्ड लॉ की. देन वील कम टुवर्ड्स फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बाद वील टॉक अबाउट द thinking distance, braking distance, stop. Newton's third law. If a body A exerts a force on body B, then body B will exert a force on body A, which is equal in magnitude but opposite in the direction. Exerts F on body B. Body B exerts a force minus F of equal size. We call this action is equal to minus reaction. Action is equal to minus reaction. तो अगर आप फोर्स यहाँ पे 5 लगा रहे हैं तो उस तरफ फोर्स -5 होगी, लेकिन वो इक्वल तो नहीं है, इसलिए हम माइनस लगाते हैं. एंड let's say this is a wall of a swimming pool, right? So what happens is a swimmer pushes against the wall, right? If a swimmer is here, let's say, swimmer will push against the wall, and the wall will push him in the forward direction, right? So this is the push against the wall of the swimming pool. Every action, there is an equal but opposite reaction. बलून है, छोड़ दें तो एयर इधर जाएगी जाहिर है, लेकिन बलून जाएगा इस तरफ. तो असल में हो क्या रहा है, ये एक्शन है एंड दिस इज द रिएक्शन. आप कभी करके देखें, बलून के अंदर उसे आप ग्लो करें एयर और उसे छोड़ दें तो एयर इस तरफ जा रही होती है, बलून आगे जा रहा होता है. कभी नोटिस किया आप लोगों ने? अब आपको पता होना चाहिए that action and reaction are equal in magnitude. Always remember that in magnitude they are equal. Action and reaction forces are equal in magnitude. They act on two different bodies. They never cancel out each other, right? Because they act on two different bodies. Because they act on two different bodies, right? This is what happens. इनका टच करना भी जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट is an action reaction force. So let's say there is a satellite here. This is a satellite that we have, and this is the planet that we have. So they are exhibiting what they are exhibiting.
action and reaction pair. Action and reaction pair, right? दो different bodies हैं ये person is pushing the ball and the ball is pushing him, so these are two different objects. अगर एक ही object पे होता तो वो cancel out हो जाता, ठीक है? तो different bodies पे ना, ये देखिए A का B पे force लगा रहा है, B A पे force लगा रहा है, right? ठीक है, 1.6 सबका ये आंसर आ रहा है जी everyone. तो आप क्या करेंगे कि you have mass here, right? And you have force of 60 Newton here, and you have force of 20 Newton, which is the friction. So this is what we have. Mass is 25 to acceleration. आपका आंसर निकाला, आपका 1.6 करेंगे. ठीक है सर. P minus 0.3 ये आपकी resultant force होगी, ठीक है? And you know that this resultant force is equal to ma. The mass is, you know that weight is equal to mg. So weight is 3 divided by 9.81. 9.8 कर लें आप इसको, 9.8. तो आप करेंगे 3 divided by 9.8 into acceleration. तो क्या आंसर आता है? 9 आ रहा है. इस तरह से क्या? Coins falls through the air from rest and eventually when it reaches a constant speed. What happens to the force P and to the resultant force acting on the coin before it reaches constant speed? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा जी, आपके पास फोर्स P को क्या होगा, इंक्रीज करेगी और रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी, ठीक है? तो आंसर सी है. आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है स्पीड के साथ. Q तो कांस्टेंट है, तो P बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और रिजल्टेंट फोर्स होती है Q माइनस P. तो जब P बढ़ेगा तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगी ओवरऑल, ठीक है? Friction is a contact force which slows down moving objects. You know, right here, that friction is a contact force moving objects. This friction is due to the microscopic surface irregularities between the two surfaces. We have here forward forces here and the frictional forces. So you should know that friction has both positive and negative effects. We're going to talk about them. Okay. Positive effects क्या है friction पे? Do you remember? Here that friction is required for walking, holding objects, producing heating. So the positive effects of friction, which फिर हमारे पास आते हैं negative effects. What happens is it causes negative effects ये होते हैं कि it causes wear and tear of moving parts and machinery, engines, right? Motors and machines. क्योंकि उसके वेयर एंड टेयर होते हैं और वो खराब हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाती है, इंजन पावर को रिड्यूस करता है, राइट? सो इट causes wear and tear of moving part in engines, motors and machines. It also reduces the engine power of the car. Engine power. ये इसके negative effects. Question is how can the friction be reduced? Question is how can, किस तरह से आप कर सकते हैं? आप surfaces को surfaces की lubrication करते हैं, grease use करें, highly polished surfaces use करें, ठीक है? So what you can do is friction can be reduced, lubrication using highly polished surfaces, using steel ball bearing enabled surfaces roll over each other. पॉलिश सर्फेसेस ये होता है, पॉलिश आप करते हैं सर्फेसेस को तो वो स्मूथ हो जाती हैं बहुत ज्यादा. और कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ बॉल बेयरिंग्स उसके अंदर होते हैं और उससे वो मूव करती हैं, जरा आराम से मूव कर सकती हैं, राइट? इस तरह के रोलर्स लगे होते हैं और उससे होता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, आप चीजों को रोल कर सकते हैं. ट्रॉलीज में भी लगे होते हैं, डिफरेंट चीजों में लगे होते हैं, राइट? ठीक है, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, सफेरिकल. ये उससे होता है फ्रिक्शन, ये मशीनरी में लगा होता है तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इसको यूज करते हैं. Let's talk about the friction in context of vehicles. अच्छा जी, thinking distance क्या होती है जी? Number one is thinking distance. It is the distance covered by a vehicle during driver's reaction time. अगर आगे कोई hurdle देखेगा
ठीक है, और सोचेगा कि मैंने ब्रेक लगानी है। तो जस्ट जितना टाइम वो सोचता है उतनी देर में गाड़ी जो डिस्टेंस कवर करती है, मतलब इस सोचा इसने और यहाँ पे इसने ब्रेक लगा दिया, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया कार ने इस इंटरवल में, रिएक्शन टाइम में, उसको हम कहते हैं थिंकिंग। सर जी तो ये हम उस डिस्टेंस से रेफर करें बिफोर द ड्राइवर हैज व्यूड इट्स ऑब्स्टिकल। yes, I mean he just saw the obstacle and he tried to put his foot on the brakes. उस दौरान में जो ठीक डिस्टेंस सर। कवर हुआ, इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज you know the thinking distance, reaction time covered by the vehicle and the brakes are applied. ब्रेकिंग में जितना डिस्टेंस कवर होगा, जब तक ब्रेक्स लग रही हैं, जब तक गाड़ी स्टॉप नहीं हो जाती, ब्रेकिंग डिस्टेंस आ रहा। नंबर 3, स्टॉपिंग डिस्टेंस। You should know that the sum of braking and thinking distance is known as the stopping distance. It is known as stopping distance. And finally, we have braking force. What is braking force? The force applied on the vehicle when the brakes are applied. Object will decelerate when the brakes are applied. Remember that object will decelerate when the brakes are applied. Remember that. ठीक है, हमेशा। तो फोर्स भी आपके पास, अगर आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो फोर्स भी आपके पास नेगेटिव आएगी, लेकिन आप उसको लिखेंगे पॉजिटिव, ये लिख के कि ब्रेकिंग फोर्स। ए माइनस ए एक्सेलरेशन है ना, तो ये डीसेलरेशन हो रही है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है डीसेलरेशन हो रही है।